अब हम जवान हवेली वापस लौट करके नहीं आएंगे, काहे से हमारी शादी हो गई है। क्या बोले? एक बात जरा कायदे से सुन लो, जो हमारा अब हम पैसा जवान एडवांस में हवेली लेकर वापस के लौट गए करके नहीं ना, आएंगे, जल्दी काहे से समेत हमारी देना शादी वापस। हो गई है। बाबूजी अभी क्या तो हम बोले? ब्लू वर्ल्ड में एक हैं। बात जरा कायदे से सुन लो, जो हमारा अब हम पैसा जवान एडवांस में हवेली लेकर वापस के लौट गए करके नहीं ना, आएंगे, जल्दी काहे से समेत हमारी देना शादी वापस। हो गई है। बाबूजी अभी क्या तो हम बोले? ब्लू वर्ल्ड में एक हैं। बात जरा कायदे से सुन लो, जो हमारा अब हम पैसा जवान एडवांस में हवेली लेकर वापस के लौट गए करके नहीं ना, आएंगे, जल्दी काहे से समेत हमारी देना शादी वापस। हो गई है। बाबूजी अभी क्या तो हम बोले? ब्लू वर्ल्ड में एक हैं। बात जरा कायदे से सुन लो, जो हमारा अब हम पैसा जवान एडवांस में हवेली लेकर वापस के लौट गए करके नहीं ना, आएंगे, जल्दी काहे से समेत हमारी देना शादी हो वापस। गई है। बाबूजी अभी क्या तो हम बोले? ब्लू वर्ल्ड में एक हैं। बात जरा कायदे से सुन लो, जो हमारा अब हम पैसा जवान एडवांस में हवेली लेकर वापस के लौट करके नहीं ना, आएंगे, जल्दी काहे से समेत हमारी देना शादी हो वापस। गई है। बाबूजी अभी क्या तो हम बोले? ब्लू वर्ल्ड में एक हैं। बात जरा कायदे से सुन लो, जो हमारा अब हम पैसा जवान एडवांस में हवेली लेकर वापस के लौट करके नहीं ना, आएंगे, जल्दी काहे से समेत हमारी देना शादी हो वापस। गई है। बाबूजी अभी तो क्या हम बोले? ब्लू वर्ल्ड में चले गए। ये हमारा नौकर मुंशी हमसे पैसे ले जा करके हनीमून मना रहा है, और यहाँ पर हमारे सारे काम रुके पड़े हैं इसकी वजह से। क्या हुआ मालिक? फोन पर इतना गुर्रा का रह रहा हो? हमारे ना रहते हुए कैसे होगा 5 दिन में? मालकिन मारी ना का तुमका? बस जुबान से एक शब्द और नहीं निकाल देना। हमारे जिंदा रहते तुमने छुट्टी कैसे की, ये बताओ पहले तुम। अरे मालिक वो शादी। क्या शादी? तुम्हें शादी करने की क्या जरूरत थी? जब हमने तुम्हें घर दिया, पैसा दिया, और यहाँ तक अपनी साइकिल भी तुम्हारे नाम कर दी, फिर भी तुम्हें शादी करने की क्या जरूरत थी, मुझे बताओ। अरे मालिक हम शादी दहेज के पीछे थोड़ी नहीं किए हैं। जैसे आपका परिवार है वैसे हम भी सोचे कि हमारा भी एक परिवार हो। हम सब तुम्हारे परिवार के ही तो हैं। अब क्या तुम इस घर को जिला घोषित करवाना चाहते हो? कौन बोलेगा भाई? ये जीआरपी का डॉक्यूमेंट्स पड़ा हुआ है। ये जीआरपी का Merhaba arkadaşlar, ben Türkay. Bu videomuz Link Server 2013 kurulum videosunun devamı niteliğinde olacaktır. Bu videomuzda organizasyonumuz içerisinde bulunan IP tabanlı donanımsal ya da yazılımsal santrallerimizin Link sunucumuzda nasıl entegre olduğu konusunu ele alacağız. Öncelikle yapımıza göz atacak olursak, bir adet hali hazırda kurulmuş bir Link sunucumuz var ki
Hello, my name is Lorenzo and I'd like to show you in this video how easy it is to set up Wombat Dialer on an existing Elastic system. It really takes a few minutes to do it. As a first step, we install Wombat Dialer on Elastics using Yum. Elastics already includes the Wombat repositories, so it's very easy to do it. Yum install Wombat. It will download the repositories and the RPMs and will do a complete installation. The installation is meant to be very easy. It will download all the required components, so you don't have to do anything manually. And once the installation is through, you can simply access Wombat through its HTTP interface. Okay, now the installation is complete. We simply connect to the box HTTP 8080/wombat, and we get to see a connection, a wizard to install the database. You enter the root password that you created when you installed Elastics for the first time, and click on Update Now. When done, when the installation completes, you check that everything went fine, and click here. You'll have to read and accept the license agreement for Wombat. When done, you're going to log in to Wombat here. Now Wombat is ready. You can log in as demo admin, password demo. You can change it. You should change it when it's running. When you see this, this means that Wombat is installed okay. When you log in Wombat the first time, it has a demo key for up to 2 channels here. We suggest, if you want to run a complete test, we suggest that you go to the Wombat website and request a free demo key for 100 channels, so you can fully evaluate Wombat on your test site. The first thing we have to do in order to set up a Wombat is to create a campaign that gets played on your Elastics PBX. The easiest thing to do is simply to create a standard message that will be broadcast to all the receivers of those calls. In order to do this, basically you create an audio file in Elastics, and then you create a specific application that will basically do the playback. We call it play message. It will do the playback when you dial 999 on this server. It will play an announcement for a Wombat message. That's it. It's very easy to do. You can do anything here, meaning that you could have an IVR, you could have a queue, you could have whatever you want. This is the simplest, the most simple case. Now we have to configure Wombat in order to have the system to run a first campaign. In order to configure Wombat, the first thing you have to is to edit its settings. Basically, we have to tell it which asterisk server you need to use. So we call it PBX, for example, the IP address, the login and password you have to use to access it, and then we save. We create a trunk. A trunk is basically a set of lines that sits on our asterisk server. We call it T1, for example, and has dial string. This means that we want this trunk to work as if those calls were dialed from within Wombat, from a local extension. So we use local Note that the dial string contains a placeholder where the actual number will be dialed. We save this. We have a capacity that we can set. Then we have to create an endpoint that is basically our destination. The endpoint is of type phone. We dial